This first session has a very clear agenda, and that is to understand the section, right? There will be some solving, but mostly the idea is to first know what the section means. Let's start with first understanding how we should, move towards that in the month after CAT. 3-4 important things you should keep in mind. Number one, revise and do the basic, the learning, the concepts that you have been doing. Don't leave that. Number two, read more and more what comes in your group. Apart from that, more of economy and business you can read now that will help you not just in CAT, but also in the multiple exams, interviews, VAT, GD coming. So on the finance page or the opinion page of newspapers, you can try and read more and more. Point number three, work. There will be classes. So first attend the classes and also then work on decision making, essay writing, and general studies. Do not miss any class. Point number four, after this first half of your ZAT schedule, there will be mocks. Take those mocks and at least 4 previous year ZAT papers you should complete and revise and redo so that you have a very good clarity of the exam. Now, understand students, ZAT is pretty different from CAT. Okay, the fundamental is aptitude, but 2 ways I feel ZAT exam is very relevant to MBA as a career. Number one, it tests us on our critical thinking ability, on our informed decision powers in the DM section, informed decision making. That is a very essential trait of a good manager. And number two, it tests us on time management. Because unlike CAT, you can move amongst the aptitude sections, verbal, DM, AR, QA, in the first paper. So if it's, on the exam day, if I assess that I have done a bit in all sections to clear the cutoff, I will go to that section where I think I am strongest or the paper is easiest on the day, and I will try to maximize score in that section. For example, if I have to take the ZAT exam, in general, possibly I would try to do as much as possible verbal and DM. So I will either bank on my strength or look at the level on the day and then try to put more time on that after I feel that I have done a little bit for sectional cutoffs in the paper. There was a connection issue. Am I audible now? Am I audible now? Okay. So what I was saying is, in that, apart from informed decision making, you also get that option to, in totality, manage the time, apart from doing some questions in all sections so that you can clear the cutoff. So time management is also tested. So this is more of a management exam rather than you should be good in all sections kind of an exam, right? So it's a different exam. There have been many instances where I've seen students getting, an average
or even a below average percentile in CAT, but doing very good in that, because the skills required are very different. It is aptitude, but then आपको ये समझना है कि बेसिक्स हर सेक्शन का बना लिया, फिर मैक्सिमाइज करना है. तो some section needs to be strong. In short, that is the key to crack CAT. So keep this in your mind. Decision making is a very enterprising section. Today, we will understand what the section means. That is the objective of the class. So with that intro, let's get into that. I'll just once again confirm, anyone, is the whiteboard visible again? Okay, thank you. Now, this is the point where I would request you to make notes. All right. Let's share and grasp the understanding of the section. Decision making as a topic is very vast. That does not check you on all of decision making. It checks you particularly on business decision making. All right. B stands for business. So you are supposed to understand and work on business cases. Keep noting, huh? So before I go into what DM means, we need to be very clear on what business cases mean. If you understand the next 15-20 minutes, if you are very clear on what I'm trying to tell you, trust me, the section will become far easy for you in terms of how to attempt. You will already be into DM. You will be a DM student in just the next 20-30 minutes. So try to make short notes ताकि ये सब चीजें याद भी रहें. To begin, what business cases mean? Why am I starting with the word business case? Because I want you to make the first reading effective. ठीक है? Quite often, when you try to read about decision making, you will get to hear about how to attempt the questions. But then there is a bias. What the bias is, I'll tell you. There needs to be a very good understanding of how to read a business case. अगर वो ही नहीं है ना, तो questions जल्दी में पढ़ ही नहीं पाएंगे. Time कम होता है. Read fast करना होता है, right? That is the game, how DM works. So पहला रीडिंग इफेक्टिव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पता रहे कि पढ़ना कैसे. So you need to understand and appreciate the meaning of business cases. Let's start from there. What is a typical business case like? Okay. There is a situation analysis. See. ठीक है. There might be उससे पहले background, introduction, basically build up to the situation, and then analysis of a situation. All right. This gets followed by problem identification, and in general, if you talk about how consultancy cases work, then you go to playing with the options. So what are the criteria on which you will evaluate options? Then you generate options, and then you try to evaluate options based on these criteria. So first, if I have to put it this way, the beginning, first part of a business case is the analysis of the situation. The second part is where the problem solving actually happens. The problem solving process is very important. In the third part, then once you have evaluated the options, you move towards the solution and or the contingency plan, or the, if it's a very detailed thing, you also talk about implementation, right? So the third part is where you talk, how are we going to implement what we are studying? So I repeat, a business case. Now this is something now which when you go to your B school, this is something you are going to learn for a couple of years doing the same thing on multiple cases. This same thing gets taught across any good B school. Essentially, it's a broad 3-step process divided into parts. The first one is kind of telling you what the situation is. Let me explain once, and I would want you to note this down. This is how a business case looks like.
To begin, let's say we are talking about a set of founders who joined hands to create something, and then what they are doing. That is the introduction. Then the business is in a particular situation. Let's say it's doing good in some aspects, not so good in some others. That's the situation analysis. ये सारा part introduction हो जाता है. ठीक है? Then comes the problem solving process. So you as a consultant, let's say you're representing, let's say, a McKinsey, and you have a client, they are facing some kind of a problem. The client knows the effect of the problem. In most cases, the client doesn't know what the real problem is, the cause is. When you start working on the situation, first you understand the situation by talking to the client, by talking to the members of their team, by talking to the different stakeholders involved. You try to understand the situation, then you work with data and the market, any kind of information you can get to identify the problem. Once you have identified the problem, then you discuss with the client what criteria you want to, solve the problem on. Based on the criteria, you generate options and then you evaluate them to finally decide which option is the best one. Eventually, you provide the solution or the recommendation with the ways to implement. And what if plan A doesn't work? You also have some pointers on contingency. This is a typical case study, pedagogy ka broad framework, which you can also use for any kind of case study contests or going further in your MBA journey, or talk about these things when you go into interviews, right? Well, एक बार नोट कर लो, कम से कम 2-3 लोग थम्स अप दे दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. This is what a business case typically looks like. ठीक है. I'll just wait for 30 seconds. If someone is noting, एक बार नोट कर लो ना. All right. Now let's move further. Let me make this more relevant for now. What does this business case mostly mean in case of DM questions? Typically, you will not get all of the things which I talked about, but you're supposed to, when you're reading for the first time, try to capture some things. What are those things? First, stakeholders. Second, their stakes. And third, problem at hand. Maybe the larger problem and or the immediate concern. These are the things. It's not like RC. You're not doing just a reading. What you're doing here is you're actually going through a business case and trying to identify who are the people who can get affected, in what manner, and what is the problem which we are facing. पहला रीडिंग में ये पकड़ना होता है. एक बार ये नोट कर लो. जस्ट 15 सेकंड्स वेट कर रहे हैं. I'll elaborate. So let's see, what does this mean? Who can be stakeholders? Anybody who has any interest, okay, or conflict. Now, these are not two things. I'm just making it, because cases ऐसे आते हैं. Interest means
any kind of thing related with the organization. That is what stakes means basically. So, different stakeholders can be mentioned in a story. It can be like, there might be floor workers, there might be supervisors, there might be managers, there might be owners in a factory setting, or there might be some other organization or the government or family members of the employees or the vendors or the shareholders. एक बिजनेस स्टोरी में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. You should, in the first reading, identify the stakeholders and, if possible, also get an insight into what their game is, what's their stake, what's their interest, or what is the conflict that they are facing. If you do this in the first reading, naturally, when you go to the questions, your ability to eliminate options or identify with the decision maker, that ability increases multifold. So it cannot just be a casual reading. While you're reading for the first time itself, you need to make sure you try to capture the stakeholder and stakes as beautifully as possible. Quite often, the problems automatically will get in your mind because generally the problems are associated with one or the other stakeholder. Having said that, problems can be classified into two types. There can be some larger issues going on, and there can be some immediate conflict or concern, some immediate conflict or concern that has happened. Okay? These are the two types of problems that you might face. Okay? तो उसको भी कैप्चर करना है माइंड में जितना ज्यादा आप कर सको. Right? Now, I would want another, a couple of thumbs ups if we are clear till here. Thinking psychology. All right, let's move to the further part. Now, coming to the problems, broadly, there can be different kind of decision scenarios based on the type of the problem. पहले इसको एक बार देख लेते हैं. Decision scenarios जरूरी नहीं है पूरा केस एक ही सिनेरियो पे हो. There can be both kind of scenarios in the same case. Depends. दो टाइप के इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हमारे माइंड में हमें क्लियर होने चाहिए. ठीक है, तो कीप नोटिंग. वन वेयर द सिचुएशन is tricky, ठीक है, or situation is possibly going out of hand. मतलब there's an alarm कि okay, something might go wrong. ठीक है. The other situation, when something wrong or bad has already happened. What I mean is, in an actual business scenario, some decisions are preemptive, while some other decisions are reactive. Okay? When it's a preemptive decision, where you have an idea that something might go wrong, but it has not happened yet, then the way to think, you are the same person, you're the same business leader, but the way to think needs to be more deliberative, communication based, inclusive, involve as many stakeholders who are involved or get affected by the decision in the decision making process. Okay? But if it's a reactive situation, something has gone wrong, right? Then you need to have a strong hand in the decision making process. Keep a very strong hand. You cannot, something goes wrong and then you start talking to people, things might get late, right? If something, so let me put it this way. Essentially, here you have to do loss maximization. Sorry, loss minimization.
And on the other side, you can still think about profit or value maximization. That's still an option. कि क्या करेंगे तो बेस्ट होगा, बट यहां पर तो लॉस कैसे मिनिमाइज करें यही इंपॉर्टेंट होता है. एक बार नोट करो एंड दो तीन लोग थम्स अप दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. Moving on. Now we have studied what a typical, business case means, what should we look for in reading, and some scenarios. Let's come to the part where decision making actually begins. And that is, we are now moving towards the place where the marks lie, the question and the options. Now, see, before even you think about what the question is asking, in decision making, the first thing which is important is to understand that this is not critical reasoning or RC. Here, there is a decision maker. The decision maker might be described in the story. And if the decision maker has any bias and you are being asked, or any interest, and you are being asked to take a decision on behalf of that decision maker in a question, you need to put yourself in the decision maker's shoes. No, that's a very bad looking shoe, but I guess you get the feeling, right? You need to put yourself in the shoes of the decision maker, because you don't have to take a decision, this person has to. So the first thing, how the story begins, is by understanding that the decision is not yours to make. In most cases, the decision would be you taking on behalf of some employee or an employer or somebody, some stakeholder, right? So be wary of that. Point number 2. What kind of options, labels, which I feel I mostly, आज फर्स्ट लेवल पे डीएम में क्या क्या तरह के ऑप्शंस माइंड में आते हैं, एक बार मैं लिखता हूं, तुम लोग नोट कर लो, फिर आई विल एक्सप्लेन एक एक लाइन. नोट कर लो ना. अगेन एक दो लोग थम्स अप दे दो इफ यू हैव नोटेड दिस डाउन. आई विल स्टार्ट द डिस्कशन. All right. Now, let's understand. In most cases, you will be looking for the most balanced one as the answer. Why? What do we mean by status quo? Status quo means जैसा है वैसा. No impact means again very similar. इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा. Indecisive means ये करना उससे बेटर है कुछ करे ही नहीं, राइट? है ना?
तो यार ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है. You are see, we are asked, it's an objective MCQ based paper on decision making, right? How can you be asked to take a decision where the decision doesn't make an impact? Fair enough. Point number two, too extreme. कभी क्या extreme on what that can vary. Too extreme can be maybe you are thinking totally different to what the organization's interests are, or totally different to what the employees' interests are. Extreme, matlab, it can be very highly biased in favor of someone or something, और दूसरे साइड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया. जैसे किसी को निकाल दो, प्राइसिंग एकदम कट कर दो. यू कैन नॉट टेक एक्सट्रीम और बायस्ड डिसीजंस, क्योंकि उसका स्कोप अगर होता ना तो कंपनी ले चुकी होती. गॉट इट? इररिलेवेंट मींस नॉट रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. कभी कभी ऐसा ऑप्शन होता है ना. कभी इस तरीके से भी होता है जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है about some stakeholder, उसका perspective, and something else is an option talks about the perspective of some other stakeholder, which is mentioned in the passage but not relevant to the stakeholder. So irrelevant usually is decision maker or decision situations irrelevant. And the last label is balanced. Now why balanced? Because they are logical. अगर आपको MCQ में आपको logically एक आंसर चूज करना है बिजनेस डिसीजन सिनेरियो में, इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड ऑप्शन. उसमें बायस आ ही नहीं सकता है, राइट? तो देखते हैं क्या बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट. बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर आर थ्री पैरामीटर्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. feasibility, then the next one is utilitarian. feasibility का मतलब होता है कि एक्सट्रीम नहीं, अगेन बैलेंस इज अपोजिट ऑफ एक्सट्रीम. फिजिबल मतलब विद इन कंस्ट्रेंट्स पॉसिबल टू डू, राइट? पॉसिबल. यूटिलिटेरियन मतलब, यूटिलिटेरियन का मतलब हुआ मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स. मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स. तो बैलेंस डिसीजन वो है जो फिजिबल है और ज्यादा से ज्यादा लोग को फायदा कर रहा है. तो आप जब ऑप्शंस पढ़ते हो तो इन टर्म्स को अगर माइंड में रखोगे तो आपका एक्यूरेसी काफी बेटर होगा. देयर आर ऑर्डरिंग बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो, जो हम लोग अभी सिनेरियो समझ रहे हैं ना. आज का ऑब्जेक्टिव है, देयर विल बी प्रैक्टिस सेशंस, बट आज का ऑब्जेक्टिव इज पहले सेक्शन समझो. आरसी से स्लाइटली डिफरेंट होता है ये, है ना. यहाँ रीडिंग करते समय थीम नहीं निकालना है, स्टेक होल्डर्स पकड़ना है, बिजनेस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शंस क्वेश्चन में जाके केवल लॉजिकल आंसर नहीं खोजना, डिसीजन मेकर को भी समझना है. ऑप्शंस में जाके देखना है कि सबसे बैलेंस्ड फीजिबल यूटिलिटेरियन डिसीजन कौन सा है. एक बार इसको लिख लो और थम्स अप दो, 4-5 लोग, व्हेन डन. I will wait for 15-20 seconds and then we'll move further. All right. Now let's see, what is there anything beyond these option labels that we need to think about? I feel there is one. One more thing which you should know, and that is, let me see if the color changes. Something which is strict no, या कहें डू नॉट्स. इसलिए मैं उसको ऑप्शन में लिख भी नहीं रहा हूं, वो तो सोचना ही नहीं है. अनएथिकल
या illegal, तो never an answer. Reason very simple. Even if somebody is not seeing that you are cheating, you are cheating. You cannot talk about maximizing other benefits at the cost of becoming illegal. Unethical implies not following the code of ethics. Code of ethics का मतलब क्या होता है, guys? Principles or values of the organization. Principles or values of the organization. ठीक है? Now, this does not need essentially be black or white cases. Let me give you an example. Let's say your company code of ethics says that after work hours, let's say after 6 p.m., you cannot ask your employees to work. Employees से 6 बजे के बाद वर्क कराना नहीं है क्योंकि वो ऑफिस आवर्स खत्म हो जाता है, राइट? नाउ सपोज किसी बॉस ने अपने एम्प्लॉय को आफ्टर ऑफिस आवर्स उसका टारगेट मीट करना है तो बोला आज 12 बजे रात तक काम कर लो, राइट? नाउ दिस इज अनएथिकल. तो ऐसा नहीं करना है. तुम टारगेट मीट कराने के लिए किसी से आउट ऑफ ऑफिस वर्क कराओगे अगर इस तरीके से, तो दैट इज नॉट कूल. कोड ऑफ कॉन्डक्ट ब्रेक नहीं करना है. ऑन द कॉन्ट्री, लेट्स से ना बॉस ने एम्प्लॉय को ऐसा कहा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप अनएथिकल काम नहीं करोगे. कंपनी का रूल्स अगर मेंशन्ड है तो उसको ब्रेक नहीं करना है. ऑन द कॉन्ट्री, अगर एम्प्लॉय ने बॉस को रिप्लाई दिया, या लेट्स से हाँ इसी सिचुएशन में एम्प्लॉय ने बॉस को रिप्लाई दिया, तो एम्प्लॉय का रिप्लाई क्या हो सकता है अगर बॉस ऐसा कह रहा है? तो वन ऑप्शन कैन बी सीधे कंप्लेन टू द सीईओ, अनदर कैन बी टॉक टू द बॉस. पहले बॉस से बात करो कि ऐसे तो नहीं होता. तो फर्स्ट टॉक टू द बॉस, because bypassing organization hierarchy is not the way. He has asked you for something, you talk to him and say that this is not correct. No point bypassing people. So rash decision making or firefighting without having the common sense of working, that is not cool. So being within the values and the principles of the organization is important. Following the right processes that is expected in a work environment, that is also important. ठीक है? If we keep these commonsensical things in mind, the section will come far easier to us, right? Having said that, again, summing up the same point, cannot be unethical, cannot be illegal. That is not allowed, right? Try to be balanced in terms of feasibility, overall utility, that is the way you need to take decisions. All right. Okay. So that was a general understanding and overview of what the section looks like. We talked about reading, and then we talked about the decision maker, and then we talked about how the options look. So what we will do today further is I'll give you a set to solve, and then I'll go through it in the discussion part. And, I'm pretty sure you'll be able to do a lot of these things. But I'll run you through once trying to, put in these labels, what we just discussed. All right. Once we are done with that, there are some videos which I'll share with you tonight, and you'll be expected to go through those today or tomorrow. Okay. So with that, let me take you to the solving part. That is the second part of the session. Try to read the way we discussed. Treat these as business cases reading. Identify problems and stakeholders while you are reading for the first time. In the solving process, try to use the understanding of the decision maker, and the elimination labels and the general values that we talked about, right? Feasibility, utility, ethics. Keep these things in your mind. तो मैं एक sheet दे रहा हूं, and I'll give you 15 minutes to go through it. जितना क्लियर लगे वो मार्क करना, जिसमें डाउट लगे मार्क नहीं करना. And it is 6:12 here. So 6:27 p.m. the discussion begins. ठीक है, तो I'm sharing 6:27. We will reconnect. Just give me a minute, The exact logic of how to read options, right? तो जो हम लोग पढ़े हैं उसको अप्लाई करके देखते हैं ना. Question solving is not the prime agenda today. Treat this as a set of examples.
using which we are learning what DM means. All right, let's get started. A to Z is an engineering college, training placements, wants to be leader in research. So research is required now. New faculty members were confirmed for teaching, but now research is a mandatory requirement. Okay. Initially, newly recruited faculty members are put on probation for 3 years. Based on their teaching and research contributions, they are, probation is extended, confirmed, or terminated, whatever. Either they're confirmed or probation extended or services terminated. Okay. And so on, right? Now, obviously, confirmation means job security and other perks. Aparna joined the firm 2 years back, right? She's from a very good academic background where she has good research contribution. But after joining, she got involved in the social outreach for COVID, and she did very good socially, but did nothing on research contributions, and the quality of teaching also declined. She has already spent a couple of years, and the confirmation is due in a year. So the stakeholders here are A to Z management. The stakes for them is the fact that they want to encourage research. Aparna is another stakeholder, and the stakes for her is she has become socially very active, right, for COVID. Let's come to the questions. The dean is representing the institute here. During the annual appraisal, realizes that the contribution needs a lot of time and effort, social contributions, research contribution. And the fact that she has not done a lot of performance in that might impact others who are on the other faculty in the same line. And he wants to communicate to the new recruits that research is important. What is the best thing that the dean can do? Okay, the answer is A. I'll just keep giving the same labels and logic that we have learned. But एक दो लोग thumbs up दे सकते हो बीच में अगर A आ गया, मतलब जिसका आंसर मैच कर रहा है, just give a thumbs up. I'll just get an idea. So the answer is A. I'll tell you why. You are appreciating, but also advising to focus on research and teaching because they are essential. This looks like a balanced, okay? I'm writing it here. This looks like a balanced option. दोनों काम कर रहे हो तुम. Okay. B देखो. प्रोबेशन बढ़ा दो. यार अभी तो टाइम बाकी है ना उसका. अभी तो एनुअल अप्रेजल है, अभी 1 साल बाकी है, अभी भी टाइम है, तो अभी से क्यों ये डिसीजन लेने का? दिस साउंड्स एक्सट्रीम. ओके. सी, हटा ही दो, लुक फॉर अ न्यू जॉब. टू एक्सट्रीम. डी, suspend their social outreach activities. One-sided decision making is not good. बैलेंस का फंडा समझो. देखो यहां पर अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन अच्छा करो इसका एडवाइस भी दिया है. देखो जो द थिंग्स, दिस इज व्हाट द सेक्शन मींस, है ना? ये आज सीखना है, प्रैक्टिस करेंगे अपन आगे. क्वेश्चन नंबर 2 में आओ. 1 साल और हो गया, अपर्णा सोशल वर्क कंटिन्यू कर रही है, बट अभी तक कुछ नहीं किया. सोशल वर्क मीडिया एंड द चीफ मिनिस्टर सब लोग अप्रिशिएट कर चुका है. डीन इज थिंकिंग उसको अगर कंफर्म नहीं करेंगे तो छोड़ देगी, तो बदनामी हो जाएगी. बट ऐसा भी तो नहीं कि कंपनी जो ऑब्जेक्टिव है कि रिसर्च को इनकलकेट कराना है इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द कंपनी, वो मिस ना हो. तो व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल थिंग नाउ? 1 साल बीत गया, अभी भी कुछ नहीं है. अब कंफर्मेशन का टाइम आ गया है और सोशली भी उसको अपलॉड मिल चुका है, तो क्या करें भाई? द आंसर इज सी. आई टेल यू व्हाई. ए, नॉन टीचिंग पोजीशन बना दो, आउटरीच ऑफिसर. अरे टीचर को कुछ और बना दोगे, टू एक्सट्रीम. ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकल सोचना है. अंडरस्टैंड? You cannot make a teacher something else just because she has been interested in that. That too for long. And terminate her for the teaching position. Again, too extreme. Her background, academic background has been good, right? Why will you terminate her? COVID was uncertain times for everyone, right? Okay. Now, B. 5 साल के बाद छोड़ना पड़ेगा. यार ये विलेन वाला खेल नहीं खेल सकते. Again, extreme. D. कंफर्म ही कर दो, गजब काम किया. तो अगेन एक्सट्रीम है ना, वन साइडेड है, समझो, है ना? सी क्यों बैलेंस्ड है बता रहा हूं. प्रोबेशन को ही एक्सटेंड कर दो और बोलो भाई क्यों? क्योंकि प्रोबेशन का काम ही तो वो सही से नहीं किए. ठीक है ना? तो निकाला ना ही कंफर्म किया, बैलेंस्ड ऑप्शन पकड़ लिया. एक बार जल्दी से थम्स अप दो अगर समझ रहे हो कि केस समझना है और बैलेंस डिसीजन मेकिंग करना है. दैट इज द की
to that DM, the first thing that you need to learn is diplomatically balanced decision lena hai. You don't have to pick extremes, because extremes means, I'll tell you why. Extremes mean bias. ठीक है, अदर थिंग्स हम लोग डिस्कस कर लिए, फिजिबिलिटी, यूटिलिटेरियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अंडरस्टैंड एक्सट्रीम्स मींस बायस. बायस कैन नॉट बी an MCQ answer because it needs universal acceptance. Got the point? है ना? So keep this in mind. Let's look at the next question. एक ई कॉमर्स कंपनी है, ऑनलाइन शॉपिंग पॉपुलर कर रहा है. पहले बुक्स में था, मस्त है स्लिंग डार्ट. कौन सी कंपनी है ये, कोई बता सकता है चैट में? फटाक से बताओ तो. कम ऑन. when I was in BIT, ये बुक्स आती थी इसकी. इंडियन कंपनी, अमेजॉन ना? इंडियन कंपनी, इंडियन नहीं है ये, इसमें कुछ नहीं लिखा. आई एम आस्किंग एन इंडियन कंपनी. फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट started with books. Flipkart was a book company totally. Anyway, चलो let's come back. Now Slingdart is an e-commerce company. ठीक है. अब इनका प्रॉब्लम क्या हुआ है कि लोग कैश ऑन डिलीवरी की वजह से इनका पोजीशनिंग स्टैब्लिश हुआ, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी की वजह से ही अब इनके ऑर्डर्स लॉस हो जा रहे हैं, तो इनसे प्रॉब्लम हो रही है. दैट इज द कोर प्रॉब्लम, राइट? ओके, व्हाट वुड स्लिंगडार्ट डू? नाउ द आंसर इज बी. कितने लोग का सही हुआ था? हम सब दो पहले. दीज आर लेवल 1 बट दैट क्वेश्चंस ओनली ना, तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं और से है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. ए, शट डाउन द सर्विस. अरे पूरे देश में क्यों बंद करें भाई? बी, ओनली जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है. देखो, नाउ अगेन अंडरस्टैंड दिस वर्ड. ये सारी बाकी चीजें जो अपन पढ़ रहे हैं ना, वो तो ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से ठीक है, बट इवेंचुअली, है ना, व्हेन आई टेक दिस थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, राइट, टेकर ऑफ द एग्जाम, ये बैलेंस्ड वर्ड बहुत काम आता है, ट्रस्ट मी. ठीक है. ओके, सी, टेक लीगल एक्शन. अरे क्या हो गया लीगल एक्शन? अगेन एक्सट्रीम जा रहा है ना? एक्स्ट्रा कैश क्या, ये तो पूरा बिजनेस ही गड़बड़ कर देगा, फीजिबल नहीं है ना? सो दीज आर द थिंग्स. अब देखो, किसी को प्लस माइनस अभी क्लैरिटी में डाउट लग रहा हो कहीं पे, कोई क्वेश्चन में, एक बार फिर से गो थ्रू करना, राइट? द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड डीएम एज अ सेक्शन टुडे. फोर्थ का आंसर बी, बॉम्बे. ओके, अब मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ. ए में क्या प्रॉब्लम है? ए और सी दोनों में क्या प्रॉब्लम है? बाईपास कर दिए यार हायरार्की को, पहले बात तो कर लो बंदे से. गेटिंग इट? है ना? डी में क्या प्रॉब्लम है? कुछ किया ही नहीं, गिव अप कर दिया स्टेटस को, है ना? मतलब कोई किसी से आर्ग्यू कर रहा है तो आर्ग्यू क्यों करें, तो बेटर है छोड़ ही दें. तो ऐसा नहीं करते, राइट? बी इज द करेक्ट आंसर. वाई? क्योंकि मैंने क्या कहा था, कम्युनिकेट करो यार. अजीत से, जिस बंदे से प्रॉब्लम हो रही है, कमल से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो पहले अंडरस्टैंड ना, एक बार डिस्कस तो करने का है. दीज आर थिंग्स विच कॉमन सेंसिकल वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस की तरह वी शुड रिमेंबर दीज ऑल्सो, है ना? दैट में ये यूज करना होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. चलो, अब इतना क्वेश्चन हम लोग देख लिया, अब थोड़ा तुमसे पूछते हैं. 5 का आंसर क्या है बताओ चैट में. विच ऑप्शन? 5 का क्या आया? करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट. सृष्टि, अक्षय, एवरीवन, वेरी गुड. हिमांशु, 5 का आंसर इज ए. अरे भाई, ये तीनों तो देखो एकदम तुरंत तुरंत भागेंगे आप. देखो, स्टेटस को तो करना ही नहीं है, ठीक है. बी और डी में एक कॉमन प्रॉब्लम है कि अरे भाई, एंटरप्रेन्योर का पर्पस ही था कि फीमेल का बढ़ाना. एक्सट्रीम है, बट मैं रीजन भी बता रहा हूँ. बी और डी में क्या है? अगेंस्ट द एंटरप्रेन्योर्स विल. एक बार थम्स अप दे दो अगर ये बात समझ में आ रही है तो. गेटिंग इट एवरीवन? डिसीजन मेकर जो है उसका, उससे मैच नहीं करेगा ना वो, करेक्ट, राइट? ओके, ई इज टू एक्सट्रीम, है ना, एंड ए इज फेयर इनफ, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज बी. एक बार थम्स अप दो इफ वी आर क्लियर. देखो, ई में फॉरगेट अबाउट द रिच, नॉट कूल. बी में कुछ मत करो, जो चल रहा है चलने दो, लोगों को अमीर बनने दो, अगेन नॉट कूल. स्टेटस को एन एक्सट्रीम हो रहा है ना? ए एंड सी आर नॉट गुड बिकॉज आप सेम प्रोडक्ट्स का ब्रांड या प्राइसिंग चेंज करके बेचना चाह रहे हो. दैट इज काइंड ऑफ अनएथिकल ऑल्सो एंड मे बी नॉट फीजिबल ऑल्सो. पीपल विल कम टू नो इवेंचुअली, राइट? बी देखो, सिमिलर प्रोडक्ट्स, डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड, डिफरेंट ब्रांड नेम्स. तो अगर आप डाइवर्स पोर्टफोलियो बना रहे हो और सेल कर रहे हो, दैट मेक्स मोर सेंस. अगेन,
the most balanced approach. Are we getting this? Again, thumbs up, दो guys, एक बार if you are understanding this. Perfect. Best solution क्या कौन है? बी बोल रहा ना कि पोर्टफोलियो को ही डाइवर्सिफाई कर दो भाई, प्राइसिंग से लेके प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ एवरीथिंग चेंज करो और टारगेट अलग अलग करो, राइट? ओके, in short we are looking at, so again I repeat, if there's an individual question which you find difficulty, एक बार फ्रेश माइंड से कल फिर से पढ़ना, बट गेट द पॉइंट, लॉजिक समझो डीएम होता क्या है, राइट? क्वेश्चन नंबर 7, नाउ आई एम गोइंग इन अ डिफरेंट वे, टेल मी और थिंक अबाउट इट, आई बिलीव बी और सी में ही कंफ्यूजन हुआ होगा. एनीवन? आंसर इज बी. एनीवन हु गॉट कंफ्यूज्ड इन बी एंड सी? आंसर भी है. किसी को कंफ्यूजन बी और सी में हुआ था? ओके, आई टेल यू हाउ. पहली बात, व्हाई नॉट ए? अगेन एक्सट्रीम है. बी बोल देंगे जाओ ठीक हो क्या हो. सी हायर नहीं करेंगे, बोलेंगे परेशानी है. नहीं करना इज नॉट अ सोल्यूशन. व्हाई? लुक एट द टोन ऑफ द पैसेज. ही इज अ हार्ड वर्किंग यंग मैन, राइट? मेहनती बंदा है यार, है ना? प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश बिकॉज वो वर्नाक्यूलर कॉलेजेस एंड बैकग्राउंड से पढ़ा है, एंड वेकेंसीज है. फ्रेमिंग ऑफ द पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेलेवेंस, इसलिए मैंने इररेलेवेंट भी एक ऑप्शन लिखाया था. बी और सी में अंतर देखो. हायर हिम फॉर द जॉब, इज गुड एट प्रोवाइड ट्रेनिंग इन द अदर एरियाज. एंड सी, प्रोडक्शन या मार्केटिंग में जॉब करेंगे लेकिन मार्केट फाइनेंस में करेंगे लेकिन मार्केटिंग में नहीं, विच रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल. सी में बायस आ जा रहा है. यू आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रोल्स जो कि पैसेज में पता ही नहीं है कि क्या 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 टाइप्स ऑफ रोल्स है. अपने मन से क्यों एक्स्ट्रा डालने का और कैसे? बी इज मोर एक्यूरेट बिकॉज द पैसेज डजंट टॉक अबाउट एनीथिंग. गेटिंग माय पॉइंट? बी और सी को जब कंपेयर करोगे तो पैसेज का बेसिस भी तो देखना है. पैसेज में कहां दिया हुआ है किस टाइप का ओपनिंग है, राइट? गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही डिसीजन लेना है, ठीक है? इसीलिए रेलेवेंस आल्सो प्लेज अ रोल. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10. चेतन टेक्सटाइल मिल्स. ऑलराइट, लेट मी होल्ड फॉर अ मिनट. मैं चैट देखूंगा अभी. हु आर द स्टेक होल्डर्स? ये बड़ा पैसेज है, चैट में लिखो तो कौन कौन स्टेक होल्डर है इस पैसेज में. राइट डाउन जल्दी जल्दी. चैट में लिखो, हु वर द स्टेक होल्डर्स इन दिस पैसेज, द लास्ट वन. Okay, so CTM management was a stakeholder. Then there was also CMMS. There were contract laborers, है ना? गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी गार्ड, ये सब भी थोड़ा स्टेक होल्डर छोटे छोटे बन गए, राइट? एंड एनीवन एल्स? आई गेस मोर और लेस कवर्ड. जो लोग पढ़े हो एक बार थम्स अप दे दो. आर वी गेटिंग दिस? जो लोग नहीं पढ़े इसको एक बार कल बनाना, है ना? These were the stakeholders, guys. समझ में आ रहा है? Yes, contractors also. Sorry, my bad. Contractors were also stakeholder. What were their stakes? The CTM management, इनका problem या stake या interest या conflict जो भी कहो was what, कि इनको profit maximize करना था, इसीलिए इन्होंने contract workers रखे. अब उससे लोचा हो रहा है. That is their problem. Immediate problem है कि लड़ाई हो गई. CMMS जो यूनियन है, उनका प्रॉब्लम है कि सबको इक्वल बना देंगे कॉन्ट्रैक्ट वालों को, तो इनका प्रिविलेजेस चला जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का प्रॉब्लम है इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो एक्सप्लॉइट कैसे ना करें. दीज आर द मेन स्टेक्स इन्वॉल्व. तो स्टेक होल्डर्स और मेजर स्टेक होल्डर का स्टेक्स, ये आपको फर्स्ट रीडिंग में निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है? एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग, एकदम बिगिनिंग ऑफ द क्लास, read a lot guys. That DM and English biggest problem that students face in the exam is कि बहुत लंबा लंबा था. That is what I hear. Sir बहुत लंबा था, कर ही नहीं पाए, टाइम नहीं मिला. Read fast, read with an objective. The basic point of objective based reading is that you become effective at speed reading. At the time when you are trying to gain efficiency, you have to maintain effectiveness. That is what the code that you are trying to crack. So read a lot, है ना? Economics, startups, any kind of financial markets, online
कुछ भी आर्टिकल पढ़ो, बता रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड. Just give me a thumbs up if you have heard about uh, RBI bringing a new currency. It's a big day for in that aspect today. कौन-कौन लोग सुना है? Riksha's heard, right? और लोग काफी लोग सुने हैं, है ना? Read about it, right? Give me a thumbs up if you have heard about G20 something, presidency, India, Andaman, something. सुना है? Yes? Okay. So read, है ना? For the next 2 months, है ना? It doesn't matter which exam, it doesn't matter whether it's an interview or the exam or the section. Trust me, you would want, whenever you feel that you have some free time in a day, read. Read economics, read startups, read geopolitics, read financial things. Just read. It is going to help you a lot in so many different things which you are going to face in the coming days. ठीक है? Reading बढ़ाओ. All right. Let's come back to that last article. I'll share the answers. एक बार देखो. तो यहाँ पर 8th का आंसर, सीटीएम मैनेजमेंट को क्या डिसीजन लेना चाहिए? द आंसर इज 3 and 4. थम्स अप देना कितने लोग का आ गया था? 3 and 4. All right. Now 3 is the most balanced one. हाँ तो 3 आ जाएगा प्रतीक, तो फिर तो ऑप्शंस में एक ही में 3 है ना, राइट? 3 is the most balanced one. Strong. देखो, one more important thing, है ना? स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स. ना यहां पर देखो एक जगह है जहां स्ट्रॉन्ग एक्शन लिखा हुआ है, ठीक है? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. स्ट्रॉन्ग एक्शन जहां पर ब्लंडर हो चुका, तब थप्पड़ मार दिया, फायरिंग हो गई, है ना, वहां पर स्ट्रॉन्ग हैंड रखना जरूरी है. आर वी गेटिंग दिस? समझ में आ रही है बात? अदरवाइज नहीं. यू डोंट डू बिजनेस इन अ फायर फाइटिंग मोड. बट अब किसी ने किसी को मार दिया, लड़ाई हो गई, तब तो करना पड़ेगा ना, राइट? ओके. जो लोग नहीं किए इसको करना आर्टिकल को फिर से ना. आई गेस काफी लोग इसको किए नहीं है. मैं इसमें ना खाली आंसर बता दे रहा हूँ. एक बार जो लोग नहीं किए हैं इसको कर लो, ठीक है? आई गेस पॉइंट समझ ही गए हो. मैं एक बार शॉर्ट में फास्ट में बता दे रहा हूँ. 9th में सीएमएमएस का क्या सही हो सकता है? 9th वाले में गाइस देखो, ए एंड डी काइंड ऑफ स्टेटस को नो इम्पैक्ट, कुछ करो ही मत, ठीक है? बी इज एक्सट्रीम क्योंकि सबको बराबर पिला देगा. सी इज द मोस्ट बैलेंस्ड वन. जो लोग किए हैं एक बार बताओ, आर वी क्लियर? मेंबरशिप मत दो, बट उनका इंटरेस्ट देखो ना, बैलेंस सोचना होता है, दैट इज द की, ठीक है? ऑल राइट. लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. Out of the options given below, which one would be the best policy decision by the government at a national level? Oh my God, income tax rates. No, 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 no. That is too extreme. D. पूरी सरकार लगा दो सीटीएम के सपोर्ट में. Again, too extreme. B और C में कंफ्यूज अगर हो रहे हो, तो the question relevance is about national level, hence C is better than B. एक बार बताओ, are we clear? B and C में नेशनल लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है on relevance. That eliminates. All right. So on that note, I will share some videos on DM. एक दो दिन में उसको पढ़ लेने का, फिर प्रैक्टिस सेशंस करेंगे अपन. एक राउंड फाइनल थम्स अप हो जाए. डू वी अंडरस्टैंड द सेक्शन नाउ? आज की क्लास का यही ऑब्जेक्टिव था. इट्स अ न्यू सेक्शन. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द सेक्शन मींस. उतना समझ में आ गया सबको? ऑल राइट देन. चलो. थैंक यू वेरी मच गाइस एंड हैव अ गुड नाइट. बाय बाय.